कम पड़ो प्लस आज वेल एज आम देखा ए डेफिनेशन आम सहित सब समय फैमिलियर अच्छे फ्रॉम द डे बिगिनिंग सकाल उठा राति शोवा पर्यंत इंटरनेट आम सहित सब अवेलेबल एंड इट इज हेल्पिंग यू इन मेनी वेज ता सहित कम्युनिकेशन करने को पाठ पढ़ा रिलेटेड कौन से सर्चिंग करने को ऑनलाइन शॉपिंग बैंकिंग ये सब सेक्टर रे हमें इंटरनेट यूज करूँ. Yes, it is now part of life. So it stands for international network or inter networking. ना हमें ग्लोबली जदि कहा सहित कनेक्टेड करवा जोटा कि हमें वन बोली कहूचे वाइड एरिया नेटवर्क तो यही जो डिफरेंट कंट्री डिफरेंट कॉन्टिनेंट एमान सहित हमें तबे कम्युनिकेशन करवा इंटरनेट रे हमें हेल्प करता हेल्प नहीं था. इंटरनेट मीन्स नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. Internet is a global collection of small individual network connected by using wireless, wired and wireless media. आमे केते इंटरनेट आमे यूज करछे कादरे हमर वाईफाई थ्रू रे आमे यूज करछे wireless speed इलेक्ट्रिक यूज करछे आ किछि किछि आमे केबल थ्रू रे कनेक्शन नउछे लैंड केबल रे आमे इंटरनेट कनेक्शन नउछे तो ये छोटो छोटो नेटवर्किंग सब मिसी की ग्लोबली आमे कोन करछे ना कनेक्टेड करछे डिफरेंट कंट्रीज से. Internet is a worldwide network or wide area network. Like what is internet? It stands for international network. It stands for international network or inter-networking. It means networks of network. It means networks of network. Internet is global collection of small individual networks. Internet is global collection of small individual networks connected by using wire or wireless medium. Wireless medium and network device to form a and network devices to form a single large network and share data, information and resource each other. It is a worldwide network. Next point. It is a worldwide network or wide area network.
इंटरनेट फास्ट जो कॉन्सेप्ट रही फास्ट आर्पानेट जो आसला डिफेंस ऑफ अमेरिका से कौन करते 6टा सिस्टम को लेकिन प्रथम इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने को लगे तो सेठू सक्सेस है सेठू इंटरनेट बैकबोन पड़ता तापर से आस्ते आस्ते कौन करे इंटरनेट को वर्ल्ड वाइड आम यूज कले एक्चुअली देखा गले इंटरनेट 1990 ये समय आसीला जहाँ कि आम एवं सब वीडियो देखी पारुचे ग्राफिक्स पिक्चर देखी पारुचे तो से समय से ग्राफिक आउ पिक्चर नथला से केवल आमर टेक्स्ट फॉर्मेट रे आम इनफॉरमेशन गुड़ाक देखुलु ओके तो एते इंटरेस्टिंग नथिला आ इंटरनेट कॉस्ट बहुत अधिक थिला तो सेति आम एते यूज करू नथिलु आमर जियो 4G मार्केट रे आसिला तो से समय समस्त फैमिलियर हेले इंटरनेट सहित आ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से हिसाब रे बहुत रुपए बढ़ी गला ऑनलाइन शॉपिंग ओके फूड ऑर्डर ये सब जिनस बढ़ तो एटा आस्था जो कॉन्सेप्ट जेसीआर लिकडर ऑफ MIT से 1962 रे प्रपोजल लेथिले इंटरनेट पे हिज इंटेंशन वाज टू शेयर मिलिटरी एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड एट डिफरेंट प्लेसेस इन यूनाइटेड स्टेट जेम कहले आर्मी रो जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ताकर जो ऑर्गेनाइजेशन सब डिफरेंट डिफरेंट जगह रे थिला से इंफॉर्मेशन गुडाक पासिंग करिया पई से एटा प्रपोजल देले इन 1962-63 लियोनार्ड नियोट्रॉक of University of California developed a concept of packet switching which was used as backbone of data transmission. तो पैकेट स्विचिंग माने आमे जो इंफॉर्मेशन गुडा का पास करूचे से इंफॉर्मेशन गुडा का सब स्मॉल स्मॉल पैकेट रे कन्वर्ट होय तो हम पाखो लाइट आसे लाइट एते स्पीड आसे तो हमको जाना पड़ेनी जे एटा रही रही आसी से एक्चुअली जेटा कंटीन्यूअसली हमको देखा जाउचे किंतु एक्चुअली से पैकेट हिसाब रे कि आसे तो आमे जते बेले गोटे डेटा जनरेट करछे इंटरनेट रे सेटा गोटे छोटो पैकेट रे कन्वर्ट होय आउ जते आमे रिक्वेस्ट पठेबा हमर गोटे अछि आगु पडिबा IP एंड TCP से कोन करे से पैकेट गुडा को गोटे क्यू रे पकई दे आउ आमे जेमते चिट्ठी पठाओ तादर टू आउ फ्रॉम रखे तो पैकेट जते आमे पठेबा ता भितरे काहा को आमे पठेबा इंफॉर्मेशन आ कोडू इंफॉर्मेशन आसुची से सब इंफॉर्मेशन ता भितरे रहिते तो इन 1969 more advanced network was established as the Pentagon, that is called the ARPANET or ARPA, containing 4 high-speed computers. This computer was called as the ARPANET. The ARPANET had 23 nodes connected to different organizations. ARPANET कौन कला प्रथम 4टा कंप्यूटर स्टार्ट कला तापर 23टा कंप्यूटर डिफरेंट जगह से इंस्टॉल कला और ता भीतर से इंफॉर्मेशन गुडा का ट्रांसफर कला in 1974 Bob Kahn and Vint Cerf proposed the foundation of network transfer protocol तो हमको इंफॉर्मेशन पठाइबा पले गोटे मेसेंजर दरकार जेम चिट्ठी पठाइबा पले आगु दूत सब व्यवहार कर दरकार तो इंटरनेट रे जतरा हम इंफॉर्मेशन पठाइबा सेठी सेमती गोटे दूत दरकार पड़ला से दूत को से कोन कहले ना प्रोटोकॉल ना देले ओके प्रोटोकॉल कंटेन द सेट ऑफ रूल्स ओके तो हमें इंफॉर्मेशन जतरा पठाइबा तो को वरी जिबा जेमते ट्रैफिक रे हम जाउचे ट्रैफिक रो रूल हम मानिया पड़ो तो आमे जतरा इंटरनेट रे डाटा शेयरिंग करिवा तो इंफॉर्मेशन ता हमरो कोउले हेतिबा दरकार तो से होई पई गोटे रूल से प्रोवाइड करले से रूल थ्रू रे हमें डाटा ट्रांसफर कर in 1984 DNS was introduced in 1991 WAIS was introduced and Hooper protocol was released तो आस्ते कोन हला ना से डेवलप हला डिफरेंट प्रोटोकॉल सब हमर एस्टैब्लिश हला इंटरनेट जते बेले हमें यूज करिवा प्रथमे हमर इंटरनेट रो बैकबोन बा इंटरनेट को हमें कनेक्शन आनिया पई कोन कोन सब जिंस दरकार तो सेही सब को नै कि हमें डिफाइन करछे इंटरनेट बैकबोन internet backbone is what a internet backbone refers to one of the principal data routes between large interconnected network and main router on the internet माने राउटर हमें इंटरनेट कनेक्शन कोड आनो छे जतले जियो आनो छे किबा एयरटेल आनो छे से प्रथम उठे सेटअप बॉक्स को आसु तो सेटु हमें कोन करछे ना इंफॉर्मेशन गुडा को शेयरिंग करछे तो एई जो बैकबोन भीतर प्रथम बैकबोन के रहला ना तुमर राउटर जोठी हमें इंटरनेट कनेक्शन टाणी के एस्टैब्लिश कर it is very high speed data transmission line backbone is a larger transmission line that carries the data gathered from smaller line
with the interconnected with it. जो बैकबोन जोटा रहला बैकबोन कौन करे छोट छोट नेटवर्क को कनेक्शन करके ताको डाटा कलेक्ट करिवो आउ से डाटा टाको नेके ट्रांसफर करिवो अदर नोड्स. The fast internet backbone is called as the NSF net. It was founded by the US government by National Security Foundation NSF in 1987. Around the world, each country has at least one backbone network operated at high speed. तो सबु country रा गोटे गोटे high speed network बा high speed internet रही थे. In India रे कौन रही? BSNL. BSNL सबु provide करूँ. BSNL नीचे रो launch करनी. तो BSNL स्पेक्ट्रम बिक्री को जेटा मन रखियो 4G हो 5G हो BSNL दे ये तो BSNL निजर में से शेयरिंग करू बुझियो जेंते हमर इलेक्ट्रिक टीपी जो टाटा नहीं थी टाटा पावर कॉर्पोरेशन नहीं टीपी डॉल टीपी CDOL डिफरेंट से होते तो ये होची से बोली internet backbone is provided by the telephone company or ISP that is called the internet service provider BSNL आगुरु थिला VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड ओटा होची भारत अछि BSNL ओटा होची VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड हैला they require high speed bandwidth connection and high performance server or router today this backbone are constructed with the fiber optics तो एबे हमें high speed network पे fiber optic cable यूज करछे backbone which is constructed by the optical fiber is called as the optical carrier. तबे हमें ए बैकबोन विषय लिखिवा तो प्रथम किछि एक्सपांड द टर्म एटा लिखिए ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP NSF National Science Foundation DSE Data Switching Exchanges DES तळे E लिखियो DESE तळे Data Switching Exchanges because what is internet backbone and rights is its feature. What is internet backbone and right its feature? It refers to one of the principal data routes between large
strategically, 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 interconnected networks, and core routers on the internet. Core routers, CORE, core routers on the internet. Next point, it is very high speed data transmission line. Next point, it is very high speed data transmission line. A backbone is a larger transmission line. A backbone is a larger transmission line that carries data gathered from smaller line that interconnected with it. Next point, the fast internet backbone was named NSFNet. Which was funded by which was funded by US government. Internet backbone is provided by, next point, internet backbone is provided by telephone company or ISP. Next point, they required high speed bandwidth connection. And high performance servers or routers, routers. Next point, today these backbone are constructed of fiber optic cables.
fiber optic cables. Next point, at the local level, a backbone is a line. At the local level, a backbone is a line or set of lines that local area network connect to for a to form a wide area network. Next point, on the internet or other one, on the internet or other one, on the internet or other one, backbone is a set of paths. Backbone is a set of paths that local or regional networks connect to for long distance interconnection. Regional networks connect to for a long distance interconnection. Feature of internet backbone. ISP होची कोन internet service provider are either connected directly to their contiguous backbone or to some larger ISP. तो गोटे ISP कोन करिवो ताकर larger network जेमति कि हमर रहला Jio रहला BSNL रहला ता सहित कनेक्टेड हबो और गोटे ISP आ गोटे ISP सहित कनेक्टेड रहिबो. The smaller network are interlinked to support the backup that is required to keep the internet service intact in the case of failure. तो प्रथमे कोन हुए डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्शन आसेनी प्रथमे कोन करिवा ना स्मॉलर एरिया रे हमें इंटर कनेक्टेड करिवा जो डिवाइस थियो आ ताकू नै कि हमें जेते हमर घर रो सब बॉल गुडा को कनेक्शन होची मेन स्विच रु हमें तार आने कि खुंटर करंट आसिले सब हमर भीतर सब जगह रे आसिला करंट तो सेमती स्मॉलर नेटवर्क गुडा इंटरकनेक्टेड हेबे से माने लार्जर नेटवर्क सहित कनेक्टेड हेबे जदि कोन से फेलियर हैला ताले स्मॉलर नेटवर्क भीतर डाटा ट्रांसफर हे करिवो. The transit agreement is a monetary contract between the several larger and smaller ISP. It is initiated to share the traffic load to handle the data traffic. जेमते कि मु कहली BSNL ट्रू समस्ते स्पेक्ट्रम किनुचन आगुर थिला एयरटेल यूनिनर ए सब सिम गुडा थिला ए सब नेटवर्क थिला ओके डोकोमो थिला तो ए माने सब कोन करथिले ना मिसी गले बे नेटवर्क तो से माने कोन करथिले ना स्पेक्ट्रम गुडा को पैसा देके किनुथिले BSNL तारो आ ताकू हमको सर्विस प्रोवाइड करथिले तो ता भीतर टेलीकॉम कंपनी भीतर रिवोल्यूशन आसिला कि केते सस्ता रे देई परिबो तो से समय से माने हरि आ तांकर निजर एंटीना नथिला जेंति कि जो बड़ बड़ टावर सब टेलीफोन टावर थिला से माने टावर यूज करू नथिले से माने हायरिंग करथिले ओके माने कि वोडाफोन टावर यूज करथिला
जेमि हमर गोटे थिला हॉच गोटे सिम थिला जोटा कि वोडाफोन सहित मिसी गला ओके एयरसेल सी भी मिसी गला एयरटेल सहित तो एमाने कोन करथिले ना अन्यर खुंटी रे माने उधार आनी की हमको नेटवर्क प्रोवाइड कर रिलायंस रिम जो निजर बंद हेगला तो देबा हेगला मालिक ओके तो से माने कोन करंती मॉनिटरी ये रे ताको लीज आकार आनी थांती केते वर्ष पे तो से समय से माने नेटवर्क प्रोवाइड कर तो लिखो फीचर्स ऑफ इंटरनेट बैकबोन First point, ISP are either connected directly. ISP are either connected directly to their contingency 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 backbone or to some larger ISP that is connected to its backbone. Next point, the smaller networks are interlinked. The smaller networks are interlinked to support the smaller networks are interlinked to support the backup that is required to keep the internet service intact. The internet services intact in case of failure. Intact in case of failure. This is done through transit agreements and peering processes. Next point. The transit agreement is a monetary contract. Between several larger and smaller ISP. It is initiated to share traffic loads or to handle data traffic
in case of partial failure, in case of a partial failure of some networks, इंटरनेट को काम करिया पे हमें डिफरेंट इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज करूचे ता भितर तीनटा टेक्नोलॉजी होची गोटे होची इथरनेट टोकन रिंग एंड एफडीडीआई इथरनेट टा होची कोन ना इथरनेट इज ए नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज फॉर कनेक्टिंग नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू फॉर्म ए लोकल नेटवर्क इथरनेट का को आजीबो द लोकली हमें मल्टीपल कंप्यूटर यूज करूचे ताको हमें लैन केबल ले कनेक्शन करियो एटा इथरनेट कनेक्शन को आजीबो it uses protocol to control passing the information and to avoid simultaneous transmission by two or more systems जदि एका संगरे समस्त डाटा ट्रांसफर करिवे तो सेठी कोन हिजो कोलिजन हिजो तो जते बेले हमें कोनोसी जो डिवाइस अछि बा कंप्यूटर अछि ताको लैन रे कनेक्टेड करिवा तारे गोटे आईपी एड्रेस क्रिएट हो से आईपी एड्रेस थ्रू रे से माने डाटा ट्रांसफर करिवे और रिसीव करिवे It is the most widely installed local area technology, and Ethernet is IEEE 802.3 standard. ना हमें जो इंटरनेट यूज करूचे Ethernet से राउचे IEEE 802.3 standard. Okay, तो लिखो expand the term रे लिखो IEEE Institute of Electrical and Electronics, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Institute of Electrical and Electronics Engineers. Hello. Again. Again. এটা আগে আপনারা দেবে প্রথম মাস মানে এটা এপ্রিল মাসে দেবে আগে মে মাসে আপনারা জুন নেবে যেতি দিন তারা খাইবা বন্ধ এই কোন সেই হিসাবে জুন মাসে করবে আগে আগে देखो Ethernet is a network technology. Ethernet is a network technology. Ethernet is a network technology used for connecting
number of computer system, to to form a FORM, to form a local area network. It was originally developed by, next point, it was originally developed by Xerox. Next point, it uses protocols to control passing of information, to control the passing of information, to control the passing of information, and to avoid simultaneous transmission by two or more system. It was widely installed local area. It is the most widely installed local area network technology. It is an, next point, it is an IEEE, capital S, IEEE 802.3 standard. 802.3 standard. Next point. The most commonly installed Ethernet system are, the most commonly installed Ethernet system are ten base T, 10 base hyphen T, 10 base hyphen T, which provide transmission speeds, up to 10 Mbps, up to 10 Mbps.
अरे जो ब्लैक मार्कर आई आगे सर आप पशि जात मार दो अच्छा टोकेनिंग टा बोले टाइम होबो आर क्लास हो डायग्राम अछि हला रे नेक्स्ट क्लास में बतेबी अटेंडेंस टा पके दो अविनाश आद्यासा साहू absent अनिशा अनुज आशुतोष absent भूमि absent विश्वजीत आचार्य absent दिव्यजीत हिमांशु माल present जगदीश बोरिडा कमलाकांत कुमकुम पूनम present
प्रदीप सब absent, प्रियंका पटनायक absent, रितिशा साई सदा absent, सत्यव्रत माझी, सत्यजीत स्वाई, शिला शिक्षा प्रेजेंट, वसीम absent, सोनाली साहू absent, सौम्यकांत प्रधान, सौम्य नायक, सौम्यरंजन जेना, सौम्य सुलग्ना सुहांशु।